Every superstar had a flop. It's not just, I mean, we get a lot of openings, we love them, they have given amazing films, that's the reason we are there. But अगर आप content को gripping नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा? So yes, I think I'll be a little more cautious. Okay, Naina, after doing this film, how did you come across as a human being or an actor? I think I have become more patient, I have become more calm, and I am a very emotional person, but I think the more I'm patient and the more softer I am, it helps me to work better with a cool mind. And see, when I saw the film, I really loved it. But when people come and tell you that, dude, this is the problem in the film, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, it really breaks your heart, you know. And I'm the kind of person who would not even interfere in anybody else's work that, you know, this is not working or that is not working. In fact, I had not even seen the film. मतलब डबिंग करते हुए जितने मेरे सीन्स हैं वो डब करके हम निकल जाता है. I had not even seen the film, so I cannot even give my opinion about it. I don't know. I don't think it's allowed to show, but yeah, at least friends, close friends or associates ko to we should show and discuss things to make it more better, because it is everybody's teamwork. It's not a one person's. It's not a one man show. Yeah. वन नाइट स्टैंड की अगर बात करें तो क्या सबसे बड़ी सीख जो आपके एज एन एक्टर आपने ली है, कितना बदली हैं आप? आई एम नॉट रिपीटिंग माय क्वेश्चन. व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर हम अप्रिसिएशन को भूल जाएं तो कितनी सेटिस्फाइड हैं आप अपने काम के साथ, या आपको ये भी लगता है कि मैं और अच्छा कर सकती थी, समथिंग लाइक दैट? एक्चुअली एक चीज़ मुझे काफ़ी फिल्म देखने के बाद मुझे ये स्ट्राइक हुआ. मैं एक वर्किंग वुमन थी और मैंने शादी उसी से की जिससे मैं प्यार करती थी. सो आई एम स्ट्रॉन्ग विद इन, आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमन. सो आई थिंक इस जनरेशन के हिसाब से बीइंग अ कंप्लीट डोर मैट डजंट वर्क, आई फील. सो अगर मेरे कैरेक्टर को थोड़ा और स्ट्रांगली पोर्ट्रे किया जाता, अ लिटिल मोर अथॉरिटेटिव, दैट यू नो शी हैज़ हर ओन लाइफ, वो फिल्म जाती है और प्रॉब्ली शी हैज़ अ शॉप ऑफ हर ओन, you know, who's more busy and who's very attractive. Even as an audience, you will not like a बेचारी that much. आजकल बेचारी लोग पसंद नहीं करते, आजकल लोग confident women को ज़्यादा पसंद करते हैं. So if it was sketched in a little different manner, I think it would have worked. I feel थोड़ा better हो सकता था logically. And मुझे scope मिलता और ज़्यादा powerfully portray करने के लिए. क्योंकि see, it's not about Sunny or Tanuj, it is about Sunny, Tanuj and Naira. All three characters are equally important. अगर मैं नहीं होती तो यहाँ पे infidelity वाला point आप नहीं दिखा सकते थे. So I think it was अगर if I was portrayed in a much stronger way, ठीक है, this also has two sides. अगर मैं doormat नहीं होती तो मैं जो उसका कन्वर्शन वाला पार्ट है कि मैं एक डोरमैट होते हुए भी मैं अपने पति को बोल देती चले जाने वाला, वो नहीं निकल पाता आइडियली. लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग से थोड़ा और अथॉरिटेटिव रहती तो एक अलग किस्म का अट्रैक्शन रहता, एक अलग किस्म का बिल्डअप रहता. सो वी रियली नीड टू हैव मोर सिटिंग्स बिफोर वी साइन अ फिल्म, probably understand the role a little more, discuss and give our opinions a little more. I think I've matured on those lines. क्योंकि एक एक्टर की भूख इतनी बड़ी होती है, उसे कुछ भी दे दिया जाए उसको यही लगता है कि मैं और चाहिए, मुझे और चाहिए. अगर क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है कि पहले फिल्म आपको चुनती है, उसके बाद आप फिल्म को चुनते हो. आप आगे क्या स्ट्रेटजी रहेगी, कैसी फिल्में चुनेंगी और कितनी होशियार रहेंगी आप फिल्मों को चुनते हुए, और कैसे रोल आपको चाहिए जिसमें आपको लगता है यार इसमें तो मैं बहुत अच्छा कर पाऊँगी? सी, मैंने ये एक थोड़ा सा लो सेल्फ एस्टीम्ड वाला कैरेक्टर प्ले करके तो देख लिया है. So I would like to go for a bubbly character, or maybe a little more stronger role, which is more content oriented, more centralized, because I'll have more scope. यहाँ पे I'm really glad कि लोगों को मेरे जो scenes थे वो bits में थे. It was not long scene. उसमें if I've able to give an impact to the audience, if I've been able to give some message or expressed it well, then I think when I have a scope for a bigger scene, bigger role or more powerful, I think I can do that in a much better or a different manner. I would have taken to a different level, I feel. Yes, as an actor, I have always been appreciated.
I have been a natural actor, and that is because I worked on my chemistry with my co-actor. That's because I worked on. I spoke to him regularly. I tried to be more interactive, especially him because he's my husband, and I need to look very natural when I talk to him. So otherwise, I'm like, I'll do my lines. I'll go sit in my vanity. So it has been a learning process for me, and yeah. जैसे कि आपने बताया बबली कैरेक्टर, कोई आपको कोई कैरेक्टर याद आता है कि कुछ वैसा करना, समथिंग लाइक दैट, जैसे करीना थी जब वी मेट में? Oh my god, that's my favorite film, and I love her for that film. I mean, she has not, उनको देख के ऐसा लगता है कि she's just played herself. खुला, confident, beautiful. Just like, she's just spontaneous, sparky. So, those are the character which public really likes. Public gets excited. Oh, she's so gorgeous. She's so natural. She's so sweet, so beautiful. So I would like to portray a character like that, which is much more stronger, much more. हाल फिलहाल की कोई फिल्म जो आपको बेहद पसंद आई, आपको लगा हो कि ये फिल्म मुझे ऑफर होनी चाहिए, तो तुम अच्छा करती है बहुत ज़्यादा? I would love to work in a film like Bajirao Mastani, Deepika Padukone's role, where she's a very, very, very intense character and romantic, out and out romantic. I really want to. Actually, I want to test myself. Am I romantic? Because I don't think anybody has called me a romantic person. So I really want to find out that, and I want roles which will test my limit. Honestly, that's gonna be the challenge. That's gonna be the push, and that will take me higher. अगर यही टीम आपको दोबारा अप्रोच करती है किसी फिल्म के लिए, तो फिर क्या आपके रिएक्शंस रहेंगे और क्या क्या नई चीज़ें हो पाएंगी? Of course, अगर रोल बहुत ही तगड़ा है, बहुत डिटेल्ड में पोर्ट्रे करने जैसा है, then I will take it up for sure. क्योंकि फिल्म होती है, कैरेक्टर होता है, कैरेक्टराइजेशन होता है, and rest is all our. I mean, I'm a hard worker. I will give my 100%. But if you're giving me only this much, then इतने में ही मैं जितना कर सकती हूँ मैं करूँगी. If you give me this much, maybe I can just use all my experience, my power, my emotions to the extent. So yes, it depends on the role. लेकिन यार कोई भी एक्ट्रेस जिसको आप बहुत आइडलाइज करती हैं कि यार ये बहुत अच्छी हैं और कुछ ऐसे बनना चाहूँगी, कोई पुरानी या कोई नई, कोई भी? माधुरी जी, श्रीदेवी जी, करीना कपूर, आलिया भट्ट and Priyanka Chopra. ये आपकी मनपसंद एक्ट्रेस है? I think they are beyond a level. Hats off to them. And I am the kind of person who really wants to go out of the box. I never thought that I'll do an adult film like One Night Stand, but it's not about one night stand. That's the twist. It's about relationship. I would like to do films which is more powerful, which has something really, really intense to show. Because, I mean, everybody can dance around trees, do ladka chitka kamar hilana and all that. That is like, we all learn, we all practice, and we all learn dance and stuff like that. We all are hardworking. But the real push you get only when you're given, your director is such who makes you do this. Like Sanjay ji, I've heard he's really, really very strict. He wants what he wants, and he will make you work hard. So I want someone like that. I want a guru like that who can really, really get the best out of me, So only a great director can get the best out of an actor. So I think I really look forward to working with such directors. यार, after doing this film, what do you expect कि आपके पास offers आएं, या फिर आप डायरेक्टर्स या कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास जाएं, उनको कहें कि मेरा काम देखिए, something like that, कुछ ऐसा होगा? See, if this film was a box office hit, then obviously मुझे वो मेहनत शायद नहीं करना पड़ता, क्योंकि recognition मिल जाती, सब ने देखा हुआ होता ये film. Abhi, obviously I'm a newcomer and I'm humble enough to go try my luck. Yeah, I'm humble enough to go give auditions and use this film as my show reel. Why not? It's all part of your struggle. So I think it's an amazing experience. I've got a good show reel. It is for them to judge that, okay, even in this limited time, limited scenes, she has given her best and she has that. So that's all I want them to understand, and
if I'm worthy, I will be there. At last, you have any upcoming projects? Yeah. क्या फिल्में आने वाली हैं? From end of May, I'm gonna be starting to shoot for a new film. It's with Sharman Joshi. So but as of now, I'm just preparing for that. शर्मन जोशी की भी हाल फिलहाल में 1920 लंदन आई है, आपने देखी? Yes. तो आपने क्या उनको कॉम्प्लीमेंट किया है, फिर क्या कैसे? हाँ, मैं तो सोच रही थी कि अभी हम लोगों ने सेम डे पे डिशुम डिशुम किया, हम दोनों की फिल्म 6 मई को रिलीज हुई है. हाँ, सो सेट पे जाके देखते हैं क्या कमाल कर सकते हैं. आई थिंक ही डिड एन अमेजिंग जॉब इन द फिल्म एंड आई रियली लाइक्ड इट. सो चलिए अच्छी मैडम, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स. थैंक यू. हाउ इज इट? कमाल. Amazing. हाउ इज इट मॉम? Chill, mom. Yeah. I'm saying. She's a writer, novelist, content writer. अरे वाह, फिर तो आपको अच्छी स्क्रिप्ट यहीं से मिल जाएगी. She's working on a script right now. तो उसमें तो आप ही करेंगी वो जो एक्ट्रेस का पार्ट है. फिरंगी ब्राइड है स्क्रिप्ट का नाम. बाल वाइट करा देंगे. Yeah, that's a good idea. Mom, I'm going to work on please. Cast me. मैम, इज देयर एनी क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिया हो या आपसे मैं पूछ ना पाया हूँ? समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा रहा हो? Anything you want to? No, it's very exhausted. I've touched upon all the points, right? Yeah, sir. You want me to talk about anything? No, I was scared. She left. Ira left. नहीं. वो फोटो हो रहा है. Oh. I'm not from here. Okay. That's why I'm thinking that why she wouldn't be. Yeah, because I was thinking of saying this. That's it.